Hello friends, I am Dr. Pradip Joshi. Welcome you in the session of Basics of Accounting. And friends, today in this part we are going to discuss the objective of accounting. The first objective of the accountancy is to keeping systematic record. In the books of accounts, friends, we recorded all the transactions. That is, the transaction may be related to purchases, may be related to sales, or some type of expenses transactions like salary as well as rent. And we also recorded the income transaction also, like interest received and discount received, etc. So my friends, all types of transactions we are recorded in the books of accounting as a chronological order. That is, all the transactions are recorded in the books of account as per date wise. So friends, this is a systematically, that is date wise transactions are recorded in the books of accounts. That is the first objective. दोस्तों, बुक्स ऑफ अकाउंट में जब हम ट्रांजैक्शन लिखते हैं, बिजनेस का हर एक ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा जाता है, चाहे वो परचेस का हो, सेल्स का हो, एक्सपेंस जैसे कि रेंट हो, सैलरी पेमेंट हो, या कोई इनकम का हो जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, डिस्काउंट रिसीव्ड हो, कमीशन रिसीव्ड हो, एक्सेट्रा. ये सभी ट्रांजैक्शन सिस्टमेटिकली मतलब क्रोनोलॉजिकली डेट वाइज लिखे जाते हैं. जिस डेट को जो ट्रांजैक्शन ऑकर्ड हुआ है उस डेट को वो लिखा जाता है, इसलिए उसे सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का है. The second is that is to ascertain the result of operations. Yes, my friends, to ascertain the result of operation, that is, in the books of accounts we are recorded all types of expenses transactions, all types of losses, as well as we recorded the transaction related to gain and income. So my friend, when we recorded income, losses, gain and income, that is all types of income and expenses transaction, when we are recorded in the books of account, we know the result. And what is the result of the business? Yes, my friend, the result of the business is shown by profit or loss. So friend, when we recorded all types of income, expenses, losses and gains, we know the profit and loss of the organization. And that's why that is the second objective, to ascertain the result of operations. दोस्तों, हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में जब हम इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस और गेन से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, इन सभी का हम सिस्टमेटिकली मतलब डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, और उसके वजह से हमारा बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि हमें लॉस हो रहा है, ये हमें पता चलता है. मतलब अपना बिजनेस का रिजल्ट क्या है, दैट इज प्लस प्रॉफिट, और लॉस मतलब लेस, या हम इसे फेल कहते हैं. जैसे आपका एग्जाम का रिजल्ट क्या आता है, पास और फेल. पास मतलब अच्छी बात है जैसे प्रॉफिट, और फेल का मतलब लॉस. तो इस तरीके से बिजनेस का रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट जरूरी होते हैं. The next one is to ascertain the financial position of the business. Yes, my friend, financial position is ascertained by the assets and liabilities of the organization. Now, what do you mean by assets? Assets means property of the businessman. That is building, machinery, land, vehicles, computers. So, these all is our assets. It may be some assets are tangible, some assets are intangible, some assets are fixed, some are current assets. So all types of assets is ascertained in the assets, as well as the liabilities also known by the accountancy. Liability means anything for which the businessman is payable or is liable for the payment. That is, suppose he taken a credit, he suppose he taken a purchase of goods on credit, he have to pay to the particular person, that is to creditors. Suppose he taken a loan from bank, he have to pay it. Any tax is remaining to pay. So this is all the liability of the business. So my friends, the assets and liabilities is shown by the accountancy, and that's why it is said that it's ascertain the financial position of the business. देखिए दोस्तों, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कौन दिखाता है? यस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज. तो एसेट का मतलब क्या? प्रॉपर्टी. बिजनेसमैन की जो प्रॉपर्टी है, जैसे मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, उसकी व्हीकल्स हो, फोर व्हीलर हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, दैट इज़ अ प्रॉपर्टी. ये जो प्रॉपर्टी, ये जो एसेट्स है, ये हमें अकाउंटेंसी से पता चलती है. इसके अलावा उसकी लायबिलिटीज़ क्या है, मतलब उसने कहाँ से लोन लिया है, किससे उन्होंने क्रेडिट पे गुड्स परचेस किया है, उसका कोई टैक्स देना बाकी है क्या, उन्होंने अगर व्हीकल्स
लोन पे लिया है तो लोन के कितने इंस्टॉलमेंट देना बाकी है, ये सभी चीज़ें हमें बुक्स ऑफ अकाउंट शो करता है। मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ये दोनों हमें एसर्टेन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। इसीलिए हमें किसी भी बिजनेस के अकाउंटेंसी से उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। दैट इज द वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। The next one is to show the liquidity position. Yes, my friend. Liquidity position means how much cash is available to the businessman. That is, when any businessman doing the business transaction, some transaction cash is comes in a business, or in some transaction there is a need to spend the amount, that is cash is goes out. That is the income transactions. By way of income transaction cash is comes in, and by way of expenses transaction cash is goes out. So my friend, all the incoming and outgoing transaction of the cash is recorded in the books of account, and that's why at the end how much cash balance is available with the businessman, it shows as a liquid position. And my friend, this liquid position is shown or ascertained by the books of accounts. जी दोस्तों, एक बिजनेसमैन के पास कितनी कैश अवेलेबल है ये पता चलता है बुक्स ऑफ अकाउंट से। तो ये एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे पास कितनी कैश है, हम कितना स्पेंड कर सकते हैं। तो क्या होता है, बिजनेस के ट्रांजैक्शन में कई बार एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं और कई बार इनकम भी आता है। मतलब जो इनकम सोर्स है वो कैश कम सी नहीं, कैश अपने पास आ रही है, और जो एक्सपेंसेस है वो अपनी कैश जा रही है। तो आना जाना तो शुरू होता है बिजनेस में, चालू ही रहता है, लेकिन एट द एंड आपके हाथ में कितनी कैश बची है कि आप कितने ट्रांजैक्शन और कर सकते हैं, ये हमें पता चलता है कैश इन हैंड से। तो इसे कहते हैं लिक्विडिटी पोजीशन। तो ये जो लिक्विडिटी पोजीशन होती है बिजनेसमैन की, ये हमें बुक्स ऑफ अकाउंट शो करता है। अगला जो है वो है टू फैसिलिटेट रैशनल डिसीजन मेकिंग। Yes, my friend. In the day-to-day activity of the business, the businessman have to take the several decisions. The decision regarding the finance, maybe it is related to marketing, sometimes it is related to productions, okay, or maybe related to human resources. So these are the various key areas where the businessman have to take the several decisions. And that's why, my friend, to take the certain decision regarding these key areas, the businessman need the informations, and this information is available in the books of account, and that's why the businessman take the rational decisions. The businessman can take the rational decisions from the accounting informations, okay, and he can improve his business. तो दोस्तों, बिजनेस में बहुत सारे डिसीजंस होते हैं। बहुत बार पजल्स में आ जाता है बिजनेसमैन कि मैं फाइनेंस की प्रॉब्लम से, ह्यूमन रिसोर्सेज की प्रॉब्लम से, मार्केटिंग की प्रॉब्लम से, प्रोडक्शन की प्रॉब्लम से, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बिजनेसमैन के पास आ जाती है। तो ये बिजनेस की प्रॉब्लम जो आती है उसमें उसे डे टू डे ट्रांजैक्शन करने के लिए बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए उस बिजनेसमैन को बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो ये सभी डिसीजन लेने के लिए उसे बेस चाहिए। तो ये बेस, ये इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस, बुक्स ऑफ अकाउंट बिजनेसमैन को हेल्प करता है। इस सभी जो उसके की एरियाज है, जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, प्रोडक्शन, किसी भी की एरिया से कोई भी अगर डिसीजन लेना हो या कोई उसमें प्रॉब्लम आ रहा हो तो वो सॉल्व करने के लिए, परफेक्ट डिसीजन लेने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल होता है। नेक्स्ट वन इज सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉज। यस माय फ्रेंड, एवरी बिजनेस is surrounded by the legal environment. That is, sometimes we have to pay the income tax, sometimes to pay the sale tax, we have to pay the GST, that is goods and service tax, as well as there are so many acts like minimum wages act. So my friend, the business, every business is surrounded with these rules and regulations, laws and act. So time to time it is necessary for the businessman to fulfill the requirement of this law, and this requirement, this fulfillment is possible with the help of accountancy. So my friend, to satisfy the law we require the accounting informations or books of accounts, and that's why it is one of the objectives. For example, we have to pay the income tax. Income tax is paid on income of the business. It is ascertained from the profit and loss account. We have to pay the sales tax. Sales is available in the books of accounts. We have to fix the minimum wages act. All the information related to human beings, income and expenses is available in the books of accounts. So my friends, to requirement, to completion of any legal provisions,
is possible with the help of accountancy, and that's why it is satisfy the requirement of law. दोस्तों आपको पता ही है, हर कोई बिजनेस घेरा हुआ है किससे? लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन से। तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन जब तक आप प्रॉपरली फॉलो नहीं करते तब तक आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, बिजनेस का ग्रोथ नहीं कर पाते। जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट है, सेल्स टैक्स एक्ट है, जीएसटी एक्ट आ गया है, मिनिमम वेजेस एक्ट ऑलरेडी है, बोनस एक्ट है। ऐसे बहुत सारे एक्ट जो बिजनेस के आजू बाजू घूमते रहते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट जब तक आप पूरी नहीं करते तब तक आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं हो पाते। जैसे कि आपको इनकम टैक्स पे करना ही है तो आपका इनकम कहाँ हुआ है, अकाउंट बताता है। आपका सेल्स कितना है, अकाउंट में लिखा है। आपको जीएसटी कितना पे करना है, सभी इंफॉर्मेशन अकाउंट में दी है। तो दोस्तों ये जो लॉ की रिक्वायरमेंट्स है, ये जो आज हमें सक्सेसफुल होना है तो इस लॉ को हमें सेटिस्फाई करना होगा, ये सभी रिक्वायरमेंट्स हमें फुलफिल करनी होगी और ये हम अकाउंटेंसी की हेल्प से सभी कर सकते हैं। तो लॉ सेटिस्फाई करने के लिए, लॉ की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने के लिए हमें अकाउंटेंसी का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। सो फ्रेंड्स, the next one is to communicate the information to the users. Yes my friends, to communicate the information, that is there are too many users who use the accounting information. It may be internal user, it may be external user. Internal user like owners, management, employees, and external like investors, suppliers, that is creditors, government, public, etc. So my friends, all these user needs the information to take the several decision at their own stage. If we are talking about the internal users, that is manager want to take their day-to-day decisions, he need the informations. Employees also want to increase their salary, they want the bonus, they want the facilities, and they all these things demanding with the help of accounting informations. Now we are going to the external users. The investor who invests the money into our business, he need the financial position, the information regarding the financial position, and with the help of financial position information, he can take the decision of his investment. The another is supplier who supply the goods on credit basis. So to fix the credit policies, creditor require our financial position. So my friend, accounting is helps to communicate all these information with the several users. जी दोस्तों, अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन यूज करने वाले बहुत सारे यूज़र है, चाहे वो इंटरनल पार्ट में हो चाहे वो एक्सटर्नल पार्ट में हो। इंटरनल का मतलब जो बिजनेस से के अंदर है, मतलब इंटरनली रिलेटेड है, और जो बिजनेस के बाहर से है लेकिन बिजनेस के रिलेटेड है वो एक्सटर्नल। इंटरनल में हम कहते हैं ओनर, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़। तो जैसे कि हम मैनेजर की बात करते हैं, मैनेजर को डे टू डे एक्टिविटी के लिए डिसीजन लेने पड़ते हैं तो उसको अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन होता है। या आप एम्प्लॉय की बात कर लो, एम्प्लॉय को सैलरी बढ़ाने अगर डिमांड करनी है, हमें बोनस चाहिए, हमें कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करो, तो वो कितने सेल्स हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, यहाँ से वो शुरुआत करता है और फिर वो डिमांड करता है। मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ को भी बहुत ही ज़रूरी होती है उनकी डिमांड कंप्लीट करने के लिए। हम एक्सटर्नल यूज़र की तरफ चलते हैं। जैसे इन्वेस्टर अपने बिजनेस में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो इन्वेस्टर पहले अपने फिनेंशियल पोजीशन ऑब्जर्व करेगा कि इनकी फिनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है, उसके बाद वो डिसीजन लेगा कि अपने कंपनी में उन्हें कितने पैसे इन्वेस्ट करना है और कितने पीरियड तक करना है। और आप अलग एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि क्रेडिटर्स मतलब जो हमें क्रेडिट्स पे गुड्स सप्लाई करता है। तो जब क्रेडिटर हमें क्रेडिट पे गुड्स सप्लाई करना होता है तब उसे डिसीजन लेना कि कितने अमाउंट तक गुड्स सप्लाई करना है, कितना क्रेडिट पीरियड देना है, ये सभी चीज़ें वो हमारी फिनेंशियल पोजीशन देख के लेता है। तो फ्रेंड्स, इंटरनल यूज़र हो या एक्सटर्नल यूज़र हो, इन्हें कम्युनिकेशन, जो अपनी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन हो, वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करने का काम अकाउंटेंसी करते। तो दोस्तों, ये थे सभी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटेंसी। इन द नेक्स्ट वीडियो हम शेयर करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।